Hello friends, welcome to Bindu Dhadwal Chemistry lessons. The topic we take today is resonance structures from chapter 4 of +1 class chemistry book. It's often observed that single Lewis structure is inadequate for representation of a molecule in conformity with its experimentally determined पैरामीटर्स. एक्सपेरिमेंटली हमने कुछ पैरामीटर्स डिटरमिन किए हैं, लेकिन उनको हम जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं विद द स्ट्रक्चर दैट वी आर शोइंग फॉर दैट, क्योंकि एक स्ट्रक्चर से ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. तो फॉर एग्जाम्पल ओजोन मॉलिक्यूल कैन बी इक्वली रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर्स 1 and 2. एक ओजोन के स्ट्रक्चर में हम फर्स्ट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड शो कर रहे हैं और सेकेंड वाले में हम डबल बॉन्ड शो कर रहे हैं. तो सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर और डबल होती है 121. बट एक्चुअल जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज हमने इनकी की है तो हमने देखा है कि बॉन्ड लेंथ जो है ना तो डबल वाली है ना सिंगल है, इनके बीच की है. इट्स 128 पिकोमीटर. और उसको शो करने के लिए दैट मीन्स कि ये जो बॉन्ड है ये एंटायरली सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड भी कैरेक्टर भी है. तो हमने नेक्स्ट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड इस तरफ शो किया और सिंगल बॉन्ड इस तरफ स्ट्रक्चर शो किया है. तो इस तरह से सेम ओजोन मॉलिक्यूल के हम दो स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं, दोनों ही उसकी प्रॉपर्टीज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ये स्ट्रक्चर्स कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे. एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड है, जिसमें बॉन्ड लेंथ इन दोनों सिंगल और डबल की एवरेज है. सो इस स्ट्रक्चर को जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको हम उसका रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं. तो स्ट्रक्चर्स 1 and 2 represent the two canonical forms, while structure 3 is the resonance hybrid. The oxygen bonds in ozone molecules are intermediate between a double and single bond. So, according to the concept of resonance, whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, a number of structures with similar energy, positions of nuclei, bonding and non-bonding pairs of electrons are taken as canonical structures of the hybrid which describes the molecule accurately. तो अब जैसे जो हमने जो canonical structures बनाए हैं उसमें atoms की position change नहीं होती है, total number of shared pair electron और lone electrons change नहीं होते हैं और energy भी इनकी equivalent होती है. इसी तरह से कार्बोनेट ले लेते हैं. तो कार्बोनेट के हम 3 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं और तीनों स्ट्रक्चर्स में ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, एक में यहाँ डबल बॉन्ड दिया है जबकि दूसरे 2 स्ट्रक्चर्स में यहाँ सिंगल बॉन्ड है. इसी तरह यहाँ एक में सिंगल है और एक में डबल और फिर से यहाँ सिंगल. सो एवरेज स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड लेंथ है इट इज बिटवीन 2 singles and 1 double bond. Resonance hybrid जो है it is average of all the 3 structures that are shown. जो 3 structures show किए उनको हम canonical structures of carbonate ion कहेंगे. और यहाँ पे जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में engaged होता है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉन बॉन्डिंग और सिंगल बॉन्ड वाले के पास 6 होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, इसके भी 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं. एक में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर शेयर हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर शेयर हो रहे हैं. दूसरे में एक तरफ 2 और दूसरी तरफ 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं. और तीसरे में जिधर पहले 2 थे अब उधर 6 और दूसरी तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं. तो ये 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के. और एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो इनके बीच का है, एवरेज है. तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज हाइब्रिड ऑफ दीज 3 कैनोनिकल फॉर्म्स 1, 2, 3. एक्चुअल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर होती है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड
लेंथ 110 पिकोमीटर होती है, जबकि जो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो 115 पिकोमीटर आ रही है, जो कि कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ है. कंडीशंस फॉर राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स should have same atomic positions. The contributing structures should have same number of unpaired electrons. The contributing structures should have nearly the same energy. The structures should be so written that negative charge is present on an electronegative atom and positive charge is present on an इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम. जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके पास टेंडेंसी होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो इस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. इन केस कभी पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेंस को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है. In contributing structures, the like charges should not reside on adjacent atoms. तो ऐसा भी कभी हो कि किसी कैनोनिकल स्ट्रक्चर में एडजेसेंट एटम्स पे एक जैसा चार्ज आ रहा है, जैसे दोनों पे पॉजिटिव या दोनों पे नेगेटिव, तो वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी रेजोनेंस को ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है. So we conclude that resonance averages the bond characteristics of the molecule as a whole. Resonance stabilizes the molecule because the energy of resonance hybrid is less than the energy of any single canonical structure. तो यहाँ हम दिखा रहे हैं अगर हम एनर्जी वाइज लें तो जो एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड एनर्जी वैल्यू है और जो 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है उसमें जो सबसे स्टेबल है, जिसकी एनर्जी सबसे कम है, इनके और एक्चुअल स्ट्रक्चर के बीच में भी एनर्जी डिफरेंस होता है. इसको हम कहते हैं रेजोनेंस energy. So what is the definition of resonance energy? It is the difference between the actual bond energy of molecule and that of most stable of the resonating structures. That structure which has least energy. So resonance energy is actual bond energy minus energy of most stable of resonating structures. Characteristics of resonance. The contributing structures do not have a real existence. These are only imaginary, proposed to explain the properties of molecule. Only resonance hybrid has real structure. So these canonical structures, we have made them to explain the properties of this structure. They actually do not exist. Because of resonance, the bond lengths in resonating structure become equal. Even though the structures show double, single, triple single or 2 double, actually all the bonds are similar. Resonance hybrid has lower energy and thus greater stability than any of the contributing structures. Greater is the resonance and resonance energy. Greater is the stability of the molecule. Concept of resonance is a theoretical concept. Now, calculation of bond order for molecules showing resonance. So, in case of molecules or ions showing resonance, contribution of each structure should be counted towards bond order. Bond order's formula will be total number of bonds between the two atoms in all the structures divided by the total number of resonating structures. For example, if benzene has 2 structures and between atom 1 and 2 there is double bond in this structure and a single bond in this structure. So in all there are 3 bonds, 2 plus 1. And how many structures are there? 2 contributing structures. So 3 divided by 2 is 1.5. So bond order is 1.5. Similarly, in carbonate ion, 1 double and 2 single bonds between these 2 atoms. So this makes 2 plus 1 plus 1, 4.
And 3 structures means 4 divided by 3 will give you bond order between carbon and oxygen 1.33. Resonance structures of few more molecules and ions. For sulfur dioxide, one is coordinate bond and one is double bond. And in the second structure, double bond is here and coordinate bond is here. In sulfur trioxide, 3 structures. Double bond is here in this structure and 2 coordinate bonds in the other bonds. Double bond here, coordinate bonds, double bond here, coordinate bonds. Benzene structure, either the double bonds are between these two here, here and here, or this position is occupied by single bond and double bonds are here. Then nitrite ion, double bond and single bond and double bond. Nitrate ion, double bond may be here, here or here. Then nitrous oxide has 2 structures, double and double or triple and single. Nitrous acid, 2 structures, double bond oxygen here or double bond here with positive charge and single bond here. Then hydrozoic acid has 3 structures, H, N double bond, N positive double bond, N negative, H, N single bond, N triple bond, N positive charge here, H, N positive here, triple bond, N positive, 2 positive and single bond, N and 2 negative. So these are different examples of resonating structures.